Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up newspaper of December 16th, 2023, the Hindu newspaper. Starting with the first one. Protest rock Parliament over security breach. As we have discussed, there was a breach in Parliament 2 days before. तो उसके हिसाब से तो प्रवेश इसमें सिक्योरिटी पर्सनल कौन से होते हैं पार्लियामेंट में, अगर पता हो तो। मानसी, I'm not sure about the social. सीआरपीएफ है शायद, आई थिंक इसका अंदर में Check डिफरेंट करना। होते हैं, और मतलब एक बार चेक कर लेना। हम्म। यस, यू आर नॉट ऑडिबल प्रवेश। सेंटर टेल्स एयरपोर्ट टू कर्व CRPF है एक्सपेंड। क्वेश्चन। It is CRPF. सीआरपीएफ ना। सेंटर टेल्स एयरपोर्ट टू कर्व एक्सपेंशन ऑफ रिटेल आउटलेट टू रिड्यूस कंजेशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एयरपोर्ट के अंदर में। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच एयरपोर्ट फेसेस अकॉर्डिंग टू यू मानसी? जनरली ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। ओके, सो यहाँ पे वन वुड बी कि जो प्रॉब्लम अभी लाइक डिजिटली डिजी यात्रा ऐप हमने लॉन्च किया है, सो उसमें एक टाइम वुड बी रिड्यूस। जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। एंड एयरपोर्ट स्पेसिफिक आप प्रॉब्लम पूछ रहे हो तो लाइक क्राउड मैनेजमेंट वुड बी देयर। देन अगर ओवरऑल अगर हम सिविल एविएशन सेक्टर की बात करें तो देयर द प्रॉब्लम वुड बी द सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ द, हम बात करते हैं कि पायलट्स को वेदर दे आर हैविंग स्लीप साइकिल उनकी डिसरप्ट नहीं हो रही है। एंड टेक्निकली वी कैन टॉक अबाउट एयरक्राफ्ट, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंजन टेक्निकलिटीज में ऑफ लेट जो प्रैट एंड विटने इंजन हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। And next would be the pricing of the ticket. So what is the methodology and proper formula भी नहीं है. So that is also being discussed and debated. प्रवेश, यू आर नॉट ऑडिबल। काइंडली रिकनेक्ट, तब होगा। तो काइंडली रिकनेक्ट फ्रॉम द मोबाइल। तो यहाँ पर सेंटर तो यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूज वेटिंग लाइन सिक्योरिटी चेक के लिए। सेकेंडली आपने से बताया कि इंजन से रिलेटेड इशू है, टर्मिनल कंजेशन है, और फिर जो प्रोटोकॉल है वो भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि नहीं, वो भी कारण रहता है हमेशा। तो रिटेल आउटलेट ज़्यादा करने के कारण देयर देयर इज़ अ कंजेशन बिकॉज ऑफ द पैसेंजर्स वेटिंग लिस्ट, तो इसके कारण इशू है। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया जी है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ ए इंस्टीट्यूशन। वो मानसी उसके बारे में पता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब आई थिंक दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। 1995 में। ओके। रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज देयर, डीजीसीए। उसका काम है एंड कि इट मैनेजेस 125 एयरपोर्ट। मैं मिनी एग्जैक्टली रत्ना है। देख लिया उसको। हाँ, और फिर मिनी एयर रत्ना। ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है। हाँ बोलो। आई एम सेइंग कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ मिनी रत्ना कंपनी एंड इट इज मैनेजिंग 125 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो इट इज अबाउट मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एंड अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ द एयरपोर्ट, तो नाम हाँ, में यस, ऑफ द। एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी नाम में ही है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी। सो औषध, जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करते हैं तो एयर स्पेस हम बोलते हैं एक टर्म की, कंट्री का ये एयर स्पेस है, तो वो कैसे डिटरमाइन होता है, या डू वी हैव एनी पर्टिकुलर कन्वेंशन फॉर दैट? कोई कन्वेंशन होता होगा, और
एयर स्पेस का जो ट्रैवल है वो भी सेलेबल होगा। वन सेकेंड, यू कैन कंटिन्यू मानसी दिस वन, आई हैव टू टॉक। ओके, सो यू कैन प्लीज फ्रीज ऑन द आर्टिकल। एमपी लैड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एमपी लैड्स नॉन लैप्सेबल फंड है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है, एंड इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एमपी लैड्स पे। यहाँ पे इट इज एमएलए लैड फंड्स कि एमएलए को भी एक डेडिकेटेड फंड मिलता है, उसमें से वी कैन से कि more or less this is concerned with the capital expenditure in terms of infrastructure creation, particular जो उनकी constituencies हैं। So this there, and according to me this comes under the RTI Act also। So ये कुछ important features हैं, and specifically यहाँ पे बोला जा रहा है कि funds it is raised rupees, जो amount है that has been raised to rupees 7 crores। So मैंने से टेल द दिल्ली असेंबली, सो ये चेंज किया गया है। पहले ये जो इसका टोटल बजट होता था इट वाज रुपीज 4 करोड़। सो ये दिल्ली में है, डिफरेंट स्टेट टू स्टेट बजट वुड बी वेरिंग, एंड एमएलए लैड फंड में भी इट डज नॉट लैप्स, एंड हर फाइनेंशियल ईयर के लिए दिस अमाउंट इज एलोकेटेड। सो एक इशू इसमें यही है कि इवन एमपी लैड में कि जो अमाउंट है दैट रिमेन्स अनस्पेंड, सो उसका जुडिशियस यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आल्सो टॉक अबाउट द फिस्कल प्रूडेंस, so दैट कैन आल्सो हेल्प दीज स्टेट्स। So Ashik, you can kindly pause the recording। तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि जो भी डिस्प्यूट है बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द एलजी, हर एक इशू सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहा है, व्हाई कांट दे रिजॉल्व इट बिटवीन देमसेल्व्स। सो Supreme Court has asked the Delhi Commission for the Protection of Child Rights to approach the High Court against the LG, and even यहाँ पे भी जो एक खिरार के जो order follow होना चाहिए, first you need to go to the High Court, उसके बाद Supreme Court। So यहाँ पे this is one thing that has been highlighted by the Supreme Court कि you have to go to High Court first, and there's this issue which is इशू ये है कि जो दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, एलजी ने उनको फंड देना बंद कर दिया है। So this is another issue that has come to the forefront between Delhi government and the LG। So onion export ban sparks stir in the farmers, traders in Gujarat as well। So we've been seeing jo onion hai, it is a part of the top scheme. Also top is tomato, onion and potato. But of late we have banned the exports. So Karuna, can you tell me the reason why we have banned the exports of onion and uske kya repercussions देखने को मिल रहे हैं? I think it is basically to curb food inflation, जो उसके prices rise कर रहे हैं। Prices are increasing, so we have banned the exports. But उसका repercussion farmers क्यों protest कर रहे हैं उसके against? आप बता दें। नहीं, you can apply a common logic. Anybody else? कि उनकी इनकम इतनी नहीं हो पा रही है। हाँ, जो एक्सपोर्ट करते थे तो द एक्सपोर्ट्स द कॉम्पिटिटिवनेस, उसके बेसिस पे दे वर एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट सिंस अभी डोमेस्टिकली प्राइसेस हायर हैं, बट स्टिल दे आर डंपिंग देयर प्रोड्यूस, क्योंकि उस स्टेट की मार्केट में प्राइसेस लो है, क्योंकि वहां पे सरप्लस प्रोडक्शन है। सो हेयर वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कि वी कैन टॉक अपॉन दी we can improve the supply chain as far as agriculture is concerned, and these farmers they can also, like they are already having the access of selling it on the e-nam, जो electronic national agriculture market है, so they can sell it anywhere in India through that particular platform, so that can also fetch them good price। so बोला ये जा रहा है कि एक्सपोर्ट बैन की वजह से फार्मर्स का इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है
in order to safeguard the interest of the consumers. क्योंकि domestic market में prices increase हो रहे हैं, तो ultimately जो consumer जिस prices पे buy करेंगे, since domestically supply हम adequate maintain करने की बात कर रहे हैं, तो उनको benefit करने या food inflation को कम करने की, तो यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि it is become farmers versus the consumers. तो एक तरीके से dichotomy है जो farmers बोल रहे हैं. बट अगेन जो एक्ट है, कौन सी एक्ट है अंडर विच वी कैन से कि गवर्नमेंट हैज आल्सो सेड कि आप होर्डिंग नहीं कर सकते हो, विच इज द एक्ट? करुणा? I think Essential Commodities Act है. Yes, it is Essential Commodities Act, and यहाँ पे it is also mentioned कि महुआ जो है गुजरात में, it is the second largest onion hub in the country, and Gondal, it is a key market in Gujarat for the onion. So now most of the states, they are now talking about financial discipline maintain करना important है. Of late we were talking about कि केरला state government का बोलना ही है कि financial crisis हो सकती है state में, because the way center is not, वो जो pattern है that is we can say has been disrupted, या जितना amount उनको चाहिए वो नहीं हो रहा है, plus जो revenue deficit है वो बहुत ज़्यादा increase भी हो रहा है. So now तेलंगाना का भी ये बोलना कि financial discipline पे हम focus करेंगे. So Chennai's hydrology, it is an opportune moment to rediscover that. So we know कि Chennai floods के बारे में, जो flood related, water related disasters हैं, so flash floods की हम बात करते हैं. So specifically urban areas में, because of the unplanned urbanization, the blockage of drainage system, and more concretization because of reduced absorption, land absorption capacity, we are seeing such disasters not just in Chennai but highlight अभी ये चेन्नई में हो रहा है. So we're talking about कि इसको अब हम resolve कैसे कर सकते हैं. So यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया जा रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट आर द फ्लड्स दैट अकर ड्यू टू द हिस्टोरिकल human errors or the blunders. So to what extent has the conventional wisdom followed by the state helped mitigate the floods and droughts? So relevant questions, rational questions are, what are the lessons learned from the past extreme events? जो पहले events हुए हैं, this is not the first time we are seeing floods in Chennai, but जो पहले फ्लड्स हुए, इंसिडेंट्स हुए, उनसे क्या हमने कुछ सीखा और कुछ इम्प्लीमेंट किया, क्या कुछ हमने पॉलिसीज में चेंजेस किए कि नहीं किए, और चेन्नई को फ्लड रेजिलिएंट कैसे हम बना सकते हैं. सो दीज आर सम क्वेश्चंस. एंड अगेन ये जो डिजास्टर है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट द डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी सो दैट द सिटी ऑफ चेन्नई आल्सो गेट्स abundant water supply. So firstly, the role of municipalities and the PRIs, that is very important here. Local level institutions. So upstream and downstream watershed area. या हम अगर बात करें, चेन्नई सिटी एंड द adjoining districts, they are richly endowed with a wonderful watershed. तो जो natural हम बोले कि factors हैं, they are already in favor of the city, but again due to anthropogenic activities that get disrupted और वो hinder हो जाते हैं. So these are the names, Kanchipuram, Thiruvalluvar, यहाँ पे has highlighted in the tank memoirs. So watershed area बहुत बड़ा है, but main problem यही है, concretization की वजह से it is not getting absorbed into the land. So after repeated flooding in the city, the key issue now is to decode Chennai's urban and peri-urban hydrology. पूरा ecosystem क्या है totality में, and make that more meaningful and scientific inventions की intervention के through we can make it flood resilient. So water bodies को restore करना important है, जो उनकी original capacity है, जहाँ पे भी it is possible and it can be done, so that we can save the substantial water runoff. And comprehensive elevation, which is drainage mapping, needs to be drawn up so as to cover the upstream or downstream watershed जो चेन्नई में है and the sea. Apart from this, water runoff, it is very high, up to 80% water runoff. This also impacts the irrigation activities also.
So water storage in the tanks, water storage वो बहुत low level पे है. So ये important area है, and catchment areas, flood plains, feeders, supply channels, ये सब keywords हैं. So geographical location की अगर हम बात करें चेन्नई की, it is uniquely placed. So which is a blessing also. वही natural factors, they are in favor. So it has 3 waterways, that is rivers, which is running through the city. So Karuna, can you name the 3 rivers which run through the city of Chennai? I think एक तो कोयम है, एक अद्यर है. I cannot recall any else. एक ये है कुसास थलैयर. So I think this is a tributary of a particular river. So Koyum, it takes care of the central Chennai, Adyar, southern Chennai mein. And Palar also, which carries the flow. This is important fact. And they drain into the Bay of Bengal. So these are east flowing rivers. So drainage system are also damaged, and they're in bad shape due to heavy encroachments, and even in the floodplains also. So this has impacted the drainage system. Apart from this, urban expansion. So scientific and planned urbanization is very important, whether we are talking about the plain regions or even the hilly states. So it is important to acknowledge the fact that the degree of urban expansion in the Chennai city has been one of the fastest in the country. Degree of urban expansion is a term that is being used there. So this is extremely critical, and the process becomes irreversible and it can be disastrous. So how we are planning for it initially, that becomes very important, because after you have built, you've done so much of construction, आप उसको फिर से reverse नहीं कर सकते. That is almost kind of impossible thing. So city has expanded from 174 square kilometer to 426 square kilometers. And CMA has expanded up till this much area. So बहुत सारी water bodies during this time period, जो natural lakes and ponds थे, we have lost them. And जो marshland था, Palikarnai marshland, we have lost it, and जो coastal wetlands थे. So all of these, ये natural absorption जो process था, जो function था, ये उसको complete कर देते हैं, उसके लिए बहुत important है. So that's all about this. Yes, so concept of thoughtful cities becomes important. The time-honored connect that will help bridge the Gulf. So we've been talking about the Sultan of Oman. Oman में we talked about India का कौन सा port है? Can you name the port? Dukkam port है. Right. So Sultan of Oman, we should remember the name also, Sultan Haitham bin Tariq. So he's visiting India, and this is the first visit to India after taking the oath in 2020. So he's successor of Sultan Qaboos. So we talk about India-Oman relationship. So Oman is the closest neighbor to India in the Arabian Gulf region, and key Omani ports we've been talking about abutting the coastline along the Arabian Sea, as well as the Gulf of Oman है, leading to the Persian Gulf and towards the Gulf of Aden. So सारी important locations है. We need to know Gulf of Aden कहाँ है, Gulf of Oman कहाँ है, Persian Gulf कौन सा region है, and Horn of Africa कहाँ lie करता है, Red Sea कहाँ है. These are all important geographical locations. Along with Saudi Arabia, UAE, Oman completes the trio of key strategic partners of India in the Gulf region. So the 3 key strategic partners for India is Oman, Saudi Arabia, and UAE. So even the ruling family of Oman always had a strong connection with India. And apart from this, and talk about people-to-people ties. These are very, we enjoy strong ties between both the
civilizations and communities. So Cold War era की अगर हम बात करें, which began after the end of Second World War, post 1945. Even thereafter, when we talk about the Arab world, so it was largely ambivalent towards India and often soft and supportive of Pakistan at the same time. So Oman एक ऐसी country थी which kept its doors open to India. So ये at the same time ये conflict prone region भी है, and it has always been an island of peace. तो ओमान में एज सच हमें कोई ऐसा मेजर वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देखने को मिले हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द सराउंडिंग एरिया, द गल्फ रीजन. सो द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, द गल्फ कंट्रीज, एंड इंडिया ने अपने टाइज अगेन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी बैलेंस किए हैं एंड विद दैट ऑफ द वेस्टर्न पावर. सो ये हमें अगेन देखने को भी मिलता है when we talk about balancing between Russia and the US. So this is what is visible here also. Strait of Hormuz becomes important. We need to locate the exact location of it. During the Persian Gulf crisis 2019 mein, when we see United States and Iran, they were on the brink of military conflict. So Oman played a key role in diffusing the tensions back then. So, okay, Gandhi Peace Prize 2019 was also conferred to the Sultan Qaboos for his leadership in strengthening the ties between India and Oman. So, Iran nuclear deal में भी Oman ने important role play किया. Apart from this, इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रूशल पिलर है इंडिया का जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है. सो दैट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट ओमान. Multifaceted engagement is there, and apart from this, we talk about defense and security engagement. It is an important pillar of a strategic partnership. So in this, when we talk about, we hold joint exercises, military exercises. Indian naval ships, they have also remained on duty on the Gulf of Oman. Anti-piracy एक important challenge है इस area में. And apart from this, during the Persian Gulf crisis 2019 के दौरान इंडिया ने launch किया Operation Sankalp to ensure safe passage of the Indian flagged ships, and जो operate कर रही थी coast of Oman पे. So Dakkam Port, here it is mentioned. So we have also signed MOU regarding this, which was again historic and historically landmark thing on the security cooperation. So security perspective से ओमान इंडिया के लिए बहुत important है. Trade and commerce is another important pillar. Bilateral trade stands at $12.4 billion. 6,000 India Oman joint ventures भी हैं. So यहाँ पे हम investment की बात कर रहे हैं. India's second largest market for the Oman's crude oil exports. So from the perspective of defense and security, trade and commerce, crude oil imports, and then India is promoting the digital public infrastructure there in Oman and in rest of the world also. So India, Middle East, Europe connectivity corridor जो announce किया गया है and the infrastructure projects linked to it. Again, the Oman is going to play an important role, and the proposal for South Asia Gas Enterprise, which is SAGE. तो एक ये private consortium है which is based in India. So यहाँ पे plan ये है कि 1400 kilometer long deep sea pipeline from Oman to India for the transfer of gas would be laid down. So this is important. And Oman acts like a gateway to West Asia for India. So be it the Gulf Cooperation Council, the Organization of Islamic Cooperation, India is although not a member of OIC, but we are invited to this. And then Arab League is an important thing. तो So ओमान even मेंबर है, can you repeat, Karuna? ओपेक मेंबर है ओमान. I think it is a member of OPEC cartel. It should be. वो ओआईसी का भी मेंबर है करना, मुस्लिम कंट्री है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज. तो इंडिया ही नहीं है सिर्फ उसका मेंबर, तो ओमान का India is not a member, right? हाँ, बट इंडिया को एज अ लाइक इनवाइटी करा जाता है. सो वी अटेंड दी ओआईसी मीट. तो यहाँ पे हमेशा ये देखने को मिलता है कि ओआईसी पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, या पाकिस्तान नहीं चाहता इंडिया ओआईसी का मेंबर बने. So intruders in parliament, we've talked about this.
कि कैसे अटैक किया गया, what was their intention, and still the investigations are going on. अब बोला ये जज his की बात only wish was to serve his country. क्या बोल रहे हो आशिक? मैं बोल रहा हूँ ये कौन से अटैक की बात हो रही है पार्लियामेंट में? कोई नया अटैक हुआ है, मतलब वही पुराने वाला अटैक है? नहीं, जो अभी रिसेंट हुआ है, few days back. अच्छा, तो आप थोड़ा बताओगे क्रक्स में क्या है, मतलब क्या हुआ है अटैक और कैसा, किसने किया, क्या कुछ मैटर है पूरा? We have repeated this a number of times, Pravesh. Although attack हुआ, मतलब there were two youth who entered into the parliament, and during the session they jumped into the house, and जो canisters था, ये आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि येलो स्मोक इसमें से निकल रही है. So this was opened up there. So एक तरीके से obviously suddenly members, the MPs, they were there, they panicked कि whether अगर उनके पास arms होते तो it could have led to a major again terror attack हो सकता था. So उनको चार्ज किया गया, they were caught hold, and unlawful activities prevention act के अंदर they have been booked. So ये पूरा इंसिडेंट हुआ है कि कितना इजीली वो लोग अंदर चले गए. तो सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड. 4 इंट्रूडर्स थे, दे हैव बीन कॉट. सिक्योरिटी ब्रीच था, सीआरपीएफ पर्सनल्स आर देयर, जो पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि सिक्योरिटी द पार्लियामेंट में कौन सी फोर्स इज देयर. सो here we have the just scanning or frisking की responsibility है, that is with the Delhi police, and the parliament duty group जो armed component है CRPF का. So they are also deployed in case an armed intervention is required. So CRPF is there. So Parliament Security Service जो एक specialized department है, they are tasked with the safeguarding the complex, and now this comes under scrutiny. Parliament Security Service. ओके, थैंक यू मैम. Okay, and Parliament does not have high technology screens to detect what people carry in their shoes. So it is believed कि जो canister था, that was carried, that was hidden in the shoes. So again, this is debatable, and let's see what actions are taken. So investigations are ongoing. ये शाही ईदगाह क्या है? तो शाही ईदगाह एक मस्जिद है, and this is there in the Krishna, joining the Krishna Janmabhoomi temple मथुरा में. So there's this debate around this. Matlab, these are completely adjoining, like Hindu temple and this masjid. So इसका सर्वे किया जा रहा है, and Supreme Court has refused कि stay नहीं किया जाएगा. हाँ, बेसिकली जैसे कि अलग अलग जगह पर जो मंदिर, जैसे बाबरी मस्जिद की बात हुई, तो मथुरा के अंदर जो कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल है, उस उसको भी ऐसा बोला जा रहा है कि इस मंदिर का कुछ हिस्सा तोड़कर वहां पर ये मस्जिद जो है शाही ईदगाह मस्जिद ये बनाई गई थी. तो अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सर्वे कर रहा है. तो जो अ, मस्जिद को सपोर्ट कर रहे हैं वकील, उनका ऐसा कहना है कि सर्वे को बंद किया जाए, कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सडनली ऐसा मैटर क्यों उठाया जा रहा है. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस कोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द ईएसआई, और सर्वे के बाद ही हम कुछ कहेंगे. And Pravesh, there is one specific act also जो हम कल भी बात कर रहे थे कि वो यही बोलता है कि मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में 1947 आई थिंक, जो टाइमलाइन एग्जैक्ट ईयर है, कि उस टाइम पे जो स्टेटस है ऑफ दीज बॉडीज जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, वर्शिप से रिलेटेड है, उनका स्टेटस जो उस टाइम पे था वो वही रहेगा. सो उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंज नहीं कर सकते. तो we'll have to find exact name of that act also. Yes, we have such an act under which it is mentioned that जो उसका इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करोगे. बट यहाँ पर बात हो रही है कि मतलब इलीगल ऑक्यूपेशन की. तो उस एक्ट के अंदर बस ये नहीं लिखा हुआ है कि इलीगल ऑक्यूपेशन है तो आप उसको हटा सकते हो, नहीं हटा सकते. तो इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर रही है अभी. हाँ, तो अभी यस वो क्लेम्स हैं, तो दे विल हैव टू बी वेरीफाइड थ्रू प्रूफ, तो इसलिए
I think it CJC, was Places of Worship Act. exact name, complete name with year, Karuna. So CJ seeks the report from Allahabad High Court on woman judge's complaint. So she is complained about sexually harassed by a district judge and his associates in UP, but was denied fair hearing on her complaint. So this violates the principles of natural justice. And मानसी सेट so का नाम so report. एक्ट 1991। तो 1991 में बोला है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ऐसी रिलीजियस बिल्डिंग्स होंगी जिनका रिलीजियस कैरेक्टर होगा, वो जैसी 15 अगस्त को थी वैसी ही रहेंगी, और उनके अंदर कोई कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई, मैंने जैसे कि बोला, अगर कोई इलीगली ऑक्यूपेशन की बात है तो उसका कोई भी मेंशन नहीं है। तो 1991 एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका नाम। ओके, थैंक यू प्रवेश। सो यहाँ पे इट इज बीइंग सेड कि जो कंप्लेनेंट है वो ये बोल रही है कि शी हैज सफर्ड द पर्सनल ह्यूमिलिएशन एंड फेयर हियरिंग नहीं की जा रही ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सो पॉश एक्ट इज देयर for this and she has lost her will to live because of this incident. So एक letter circulate किया उन्होंने social media पे, through which she complained to the CGI and CGI of the Allahabad High Court. So not CGI, Chief Justice of the Allahabad High Court and administrative judge, but again कोई कंप्लेन रजिस्ट्रेशन या कुछ हुआ नहीं। सो इंटरनल कंप्लेन्स कमेटी होती है, हर एक हाई कोर्ट में होती है। तो इट टुक 6 months and 1,000 emails to even start an inquiry into her complaint. So this is actual the ground situation. So I felt like my life, my dignity, my soul have been dismissed. I felt like personal humiliation, the open letter, this was mentioned there. So complaining through social media करना पड़ा because again कोई action, कुछ satisfactory step नहीं लिया गया। So then end में social media ही बचता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इट्स अ कोर्स ऑफ, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि मतलब जो जज कह रही हैं वो ही मतलब पूरा कंप्लीटली ट्रू हो। तो सोशल मीडिया को आजकल यूज नेगेटिव के लिए भी किया जाता है, पॉजिटिव के लिए भी। तो मेरा ये मानना है कि जो रिटायर्ड लेडीज जज हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, उनकी कमेटी बैठनी चाहिए, और एक पूरा प्रोसेस इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, और जो रिजल्ट आए उसके बिहाफ पे फिर हमें बोलना चाहिए कि ऐसा वो कुछ तो होगा प्रवेश, लेकिन यहाँ पे इशू तो यही है ना, उसकी कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं की गई। 6 महीने तो उसकी कंप्लेन रजिस्टर करने में लग गए एंड 1,000 emails जो उसको भेजनी पड़ी। तो कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन तो तब होगी ना बाद में। तो यही मेन प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इवन जैसे जो प्रॉब्लम बोलते हैं पुलिस स्टेशन में, जो वुमेन कंप्लेनेंट्स है वो FIR नहीं रजिस्टर करते हैं। So this is kind of similar issue. So virtual mobile number app दूसरा told to halt the operation. So Department of Telecommunications, it has issued an order essentially halting the operations of दूसरा app completely. तो virtual मोबाइल नंबर्स जो इशू किए जाते हैं या बोलते हैं जो ई सिम एक तरीके से, वो भी वर्चुअली एक्ट करता है। सो दिस इज बीन बैंड एंड so they were selling the secondary mobile numbers to the users to hand out at shops or online platforms पे, मैं बता and देता हूँ when क्या providing a number is mandatory. Yes. इसमें इसमें पूरा मैटर ये है कि जो दूसरा नंबर होता है वो ऐसा नहीं कि वो इलीगल होता है, वो लीगल है किन के लिए? जो कमर्शियल कंपनी है, जैसे कि अमेजन हो गया, उबेर हो गया। इनको देखा होगा, एक जो ड्राइवर्स होते हैं, एक तो पर्सनल नंबर होता है, और आपको जो कॉल करते हैं वो दूसरे नंबर से करते हैं। तो वो वर्चुअल नंबर होता है जो कंपनी इनको देती है, ई सिम बेसिकली होती है वो। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये अलग अलग जो ऐप बना रहे हैं लोग, ये भी दूसरे नंबर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके इलीगल एक्टिविटीज में उलझने के चांस है। तो इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कह रही है कि इस तरीके से आप दूसरा नंबर अलॉट नहीं कर सकते, सेकेंडरी नंबर्स। और वर्चुअल सिम होती ई सिम, जो आई थिंक बहुत सारे फोनों में आज के टाइम पे हम देखते हैं, जिसमें कि आपको हार्ड सिम नहीं चाहिए थी, तो उसमें आधार का भी, फेक का भी एक चांस रहता है। हम्म।
So exports have shrunk again, trade deficit narrows as imports fall faster. So trade deficit इसलिए कम हुआ क्योंकि imports ज़्यादा speed से और ज़्यादा amount से कम हुए compared to जिस amount से exports reduce हुए हैं. So we've been seeing कि इंडिया को जो current account deficit रहता है जिसको हम CAD बोलते हैं वो majorly it is because of the merchandise trade deficit. And services में भी more usually we have the surplus. So surprise drop. November trade deficit narrows beyond the expectation to $20.58 billion after the decline in the imports outpaces the contraction in the exports. So trade deficit is at 6.7%. And जब इसको compare करें with the last year's October, so it was a 31.2%. So it is 31.2% less than the October's tally. So major decline हुआ. Trade deficit this fiscal is 12.1% narrower than in the same period. And अभी because of the global economic situation concerns हमारे यही हैं कि जो trade है उसके ऊपर हमारा impact होगा. Exports would be impacted. So as an alternative, we are seeing that India is signing more free trade agreements. We are looking at alternative markets like Southeast Asian economies, so that again our exports are not they don't become too volatile or don't reduce much, given the economic slowdown that we are seeing in the advanced economies like in the Western world. So trade is not one way. It is not one-way traffic. It should be seen in the global context. So GDP growth is not high in many countries and interest rates have not gone down. So ये दो factors हैं, and although global trade it is suffering, but India is holding fort and our exports, they have beaten the global trends in a significant way. So green shoots are visible in last couple of months, we can say, and exports have been positive in November, which is higher than the overall exports, which is visible in the last year during the same time period. Actual services exports numbers, they will be available later on. Okay, so intangible exports, we're talking about again. Intangible is services exports. G7 Russian diamond curbs won't hurt us. So what is G7? Group of G7 nations. So government is confident G7 nations move to block the entry of Russian diamonds into their markets will minimally disrupt India's diamond processing business. So lab grown, yes, बोलो अगर आपको पता है तो. हाँ, तो G7 कंट्रीज के अंदर बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो ये एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज हाईली डेवलप्ड कंट्रीज बची, जो एडवांस इकोनॉमीज मानी जाती है वर्ल्ड की, इसमें आता है कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ईयू. ये ईयू लास्ट है, यूरोपियन